Assalamu alaikum Right. and very warm welcome to everyone joining us today for this important session on Sharia compliant investment opportunities for non-resident Pakistanis. The purpose of this webinar is to connect with the Pakistani diaspora in Canada as well as other countries and to share valuable insights on how you can participate in Pakistan's capital market through the Pakistan Stock Exchange. We will walk you through the investment options available, how to get started, what to know before investing, and the process of repatriating money back to your home country. We are honored to host a distinguished panel of speakers who bring deep expertise and diverse perspectives to this discussion. So, from the diplomatic side, we have Mr. Khalil Ahmed Bajwa, who is the Consul General of Pakistan in Toronto. We have got Mr. Altamash Janjua, who is the Trade and Investment Counselor in Toronto. Representing Pakistan Stock Exchange, we have Mr. Farrukh Sabzwari, who is the CEO of Pakistan Stock Exchange. We have Mr. Jawad H. Hashmi, who is the Chief Operating Officer at the exchange. Then we have Mr. Amir Kanju, who is leading the strategy, product, and data science. And from the financial sector, we have Mr. Ahmad Ali Siddiqui Saab, Group Head of Sharia Compliance at Mizan Bank. We have Mr. Imtiaz Gadar, who is the CEO of Mizan Investment Management Limited, and Mr. Farhan Rizvi, who is the Country Head Sales JS Global. Together, this esteemed panel will guide us through the opportunities, processes, and the outlook for the Sharia-compliant investments, helping NRPs understand how they can confidently participate in Pakistan's capital markets. So, with that note, I would like Khalil Ahmed Bajwa Saab to, have his opening remarks so that we can hop into the conversation. Thank you very much, Fahad Asif Sahab. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Distinguished guests, fellow Pakistanis, and respected participants, Assalamu alaikum and very warm welcome to all of you joining us today from across Canada and beyond. It is a distinct honor for the Consulate General of Pakistan here in Toronto to host this vital session on the subject of Sharia-compliant investment opportunities for non-resident Pakistanis. Today, we are not just discussing financial figures, we are exploring a bridge that connects our diaspora's hard-earned success back to the rapid economic evolution of their homeland. A special welcome to our experts. I would like to extend a heartfelt welcome to the leadership team of the Pakistan Stock Exchange. We are privileged to have with us today Mr. Farrukh H. Sabzwari, CEO of Pakistan Stock Exchange, whose strategic vision continues to modernize our capital markets. Mr. Amir Kanju and Mr. Jawad H. Hashmi from Pakistan Stock Exchange leadership, who bring deep expertise in product innovation and Sharia initiatives. Our esteemed partners from Mizan Bank and JS Global, whose dedicated services make Islamic investment accessible and seamless for the global Pakistani community. Celebrating Pakistan Stock Exchange, a global frontrunner. We meet at a time of extraordinary momentum for the Pakistan Stock Exchange. As we look at the data today, the performance of Pakistan Stock Exchange is nothing short of historic. As evidenced by our latest market analytics, the Pakistan Stock Exchange has emerged as one of the best performing markets globally. In the regional landscape, Pakistan has significantly outperformed many of its peers, posting a remarkable 50.34% return, surpassing major markets like Singapore, Japan, China, and India. To our non-resident Pakistani community, your contribution through remittances has always been the backbone for our economy. Now, through the initiatives like the Roshan Digital Account and Roshan Equity Investment, you have the opportunity to move beyond just sending money home. You can become stakeholders in Pakistan's premier corporations. Today's webinar is designed to show you how to grow your wealth in a way that aligns
with your faith and values. I encourage you to engage deeply with our speakers and experts and take full advantage of the Q&A session at the end of this webinar. Thank you for your presence and your unwavering commitment to Pakistan. Pakistan Zindabad. Thank you, Khalisa, for the opening remarks and giving us a preview of what we should be expecting out of this webinar. I would like Mr. Farooq Sabzwari to kindly share his views on the topic that we are about to discuss today, as well as share with us some strategic overview of the market. Ji, Assalamu alaikum, everybody. I'm going to keep my camera off while I'm speaking. I've realized the signal is not too good when both things are on at the same time. So my apology. I will switch on the camera once I'm done for better reception for everybody else. Honorable Consul General Sahab, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much for joining us and for this initiative, because we are constantly looking at ways and means to attract the diaspora to the capital market in Pakistan and to engage with them. And it's events like these which are very successful in engaging the diaspora that is abroad, that is looking at the market from a distance and going, how do I participate? So these are always very helpful sessions. I also want to thank my compatriots who will also be speaking today, my teammates, head of marketing and head of product, and the COO, Hashmi Saab. Also, thank you to the Al Mizan CEO plus Mizan Banks, Ahmed Saab, and the head of sales of JS Global. With that, very quickly, very rightly said, Bajwa Saab, market has done phenomenally well in the last 2 years. And everywhere I go, people ask me, what is the reason for this uptick that you're seeing? And really, it just goes with one word, which is macroeconomic stability. 2 words, sorry. And that stability is what has led to the uptick that you've seen. I'm glad you mentioned 50% is the return we saw last year. Market's already up 10% this year. So it's headed for what people described 2.5, 3 years ago as a multi-year rally, and that continues. Because I think all the stars look like they're aligned. It's not only macroeconomics, which is very good tailwind that we've received at the PSX. So this current government has given us stability of currency, obviously some strength in forex reserves. I have to remind people that policy rate not too long ago had hit 22% and now it's 7.5%. I have to remind people that inflation numbers were 38 odd percent. That was the high 2.5 years ago. And today it is very slightly north of 5%. And we've hit stability there as well. Forex reserves at its low were only a couple of weeks of import cover. Today they are a touch less than 3 months of import cover. Foreign exchange itself has been very stable, and that is one big factor that drives people's sentiment. So the positivity that you see on the market today, even though it's given an 80% return last year, which is 2024, it gave a 50% return prior to that as well, north of 50 in fact. So it continues to give you a multi-year rally. Also important to note for people who are looking at the market, this is clearly a very big homegrown rally. And what I mean by that is foreigners in total have sold, even just this year, in the last 7 odd months of the last fiscal year, they've sold $320 to $340 odd million worth of stock. All of that has been bought by domestic institutions. So our domestic institutions finally have firepower. Otherwise, usually what would happen is when foreigners would sell, there would be some destability on the market and you would see markets come back. This time, finally, we found a savings pool which provides a very good support base for the equity market at this level. On to the subject at hand, which is Sharia, very rightly said. It is front and center of everything we do. After the ruling by the Federal Sharia Court in 2022,
So really, the elimination of riba is now very well enshrined in our constitution with a deadline of January 1st, 2028. And under our apex regulators guideline, which is the SECP, we are actively strengthening the Sharia compliant marketplace. We already launched a Sharia compliant trading platform. There's a mention of Roshan Equity Initiative, which we undertook. Also, we've launched a government debt sukuk, a very successful debt sukuk platform at PSX, about 4.5 trillion rupees worth of sukuk trade at the PSX today. This was not a reality 2 years ago. So within those 2 years, you've seen a lot of changes. And the one big change I can denote is the availability of a Sharia compliant instrument within the shape of a sukuk, which is listed on the exchange. We've also completed our first ever green sukuk. That happened last year as well, which was a green sukuk issued by the government of Pakistan. In fact, 83% of the total corporate debt issuance over the last 5 years has been in sukuk. So if you're looking for a sukuk instrument and to start with only 5,000 rupees worth, the PSX is your place to start. I will leave it at that. I know there are a number of developments we are working on at the PSX, but rather my team talk about the products that are up and coming. But I'll just end my own two thoughts with the fact that despite these challenges, whatever external or others, fiscal, there is a lot of resilience today in the markets, which is helped by obviously the resilience of remittances, whether it's IT exports or, as I mentioned, reserves. We remain committed. We are running a three-pronged strategy whereby we're attracting new investors both domestically and from abroad under the market development umbrella. You'll be happy to know for people who trade IPOs or like to trade new listings, we've got a pipeline of 12 to 14 odd listings in the next 12 to 14 months that you will also see coming from the PSX. I leave it at that. I let my colleagues continue with product and operational matters for you to engulf in. Thank you very much. Thank you, Farooq Saab, for the details and these stats that are very critical to everybody who is willing to or thinking about investing in Pakistan Stock Exchange or in the equity market of Pakistan from abroad. Now, moving on, we would like to move towards Mr. Amir Mushtaq Kanju. He will be talking about the products at the Pakistan Stock Exchange, indices, performance, future projects, role of the SECP, and things related to that. Amir Saab, if you could please turn your camera on as well as share your presentation. Thank you. Thank you, Fahad. I hope the presentation is visible to all, and I'm also audible to everyone. Yes, you're audible. Kindly continue. Thank you so much for the opening speech from Mr. Farooq Saab and Mr. Khalil Saab. So I will just walk you through about a brief on Pakistan Stock Exchange. We have around 530 listed companies on the main board. We also have an SME board on which we have 6 listed companies. 50% of the listed companies on the main board are Sharia compliant. We have a market capitalization of $74 billion US, which represents 18% of the GDP, and 62% of which are in Sharia compliant companies. In terms of average daily traded value in the current fiscal year, we have seen an uptick in the value traded, mainly because of the interest driven by the macroeconomic stability. So daily traded value is somewhere around 167 million US dollars, and around 70% of that is traded in Sharia compliant companies. So that shows the interest from the Sharia compliant and Sharia conscious investors and institutions. We also have real estate investment trust. Currently, we have 5 listed companies out of 4 are Sharia compliant companies. We also have exchange traded funds to promote retail investments. And out of those 9 ETFs, there are 2 offerings in the Sharia compliant manner.
We also have a debt platform. And in terms of corporate listing, if we see the last 5 year data, 83% of the corporate financing was made in Sharia compliant manner in terms of Sukuk. That also shows the demand that is generated in our side. In terms of government debt auctions, which we have recently introduced in December 2023, so far it's $15.45 billion raised in 30 different auctions. As an exchange, we have been the best Islamic exchange for the 3 consecutive years, 2021, 22, and 23. We are a full member of World Federation of Exchanges, which is the highest global association of the exchanges. We are also member of the UN Sustainable Stock Exchange initiatives. In terms of Pakistan's capital market ecosystems, we are regulated by the apex regulator, Securities and Exchange Commission of Pakistan. We are supported by our SRO or capital market infrastructure institutions in terms of clearing and settlement and risk management frameworks, which is done by National Clearing Company of Pakistan. And we are also supported by the Central Depository Company of Pakistan, which is a sole depository company that conducts different functions in addition to the depository functions. We have around over 200 active brokers. As we are moving towards a Sharia compliant platform, and there's lots of Sharia compliant regulatory changes have been made. So far, we have onboarded 2 Islamic brokers. In terms of mutual fund industry, we have around 23 asset management companies, 4 of which are in fully Sharia compliant manner. And the total asset under management of the industry is currently at 14.99 billion US dollars. In terms of returns, as mentioned by Mr. Khalil, we have been the best performing market for the last 3 years. However, of the last 1 year, we are the second best performing market. Over the last 5 years, we are also the second best performing market. Whether it's been a conventional index or the KMI index, both indices have performed better than various markets. If we see MSCI Emerging, MSCI Frontier, Pakistan Stock Exchange has outperformed both the indices, which represents two different market sets. Despite this market rally, we are also seeing the valuations are still at the lower end as compared to the other regional markets. If we see the regional dividend yield ratio, the ratio is highest in terms of Pakistan's market, and the price to earning ratio is still the lowest, still among the lowest in terms of the regional markets, though it has been raised from 5 or 6 times, which we have seen in the past 2 years. In terms of products offering, as I just mentioned, we have over 250 Sharia compliant companies. We have also introduced a dedicated Sharia compliant trading platform for expatriates under the Roshan Digital Account umbrella. We also have listed ETFs, REITs, Modarbas. We also have information products, which includes indices. We are offering Sukuks, whether government or corporate, and we also have a Murabaha share financing system, which is the alternative, Sharia compliant alternative of margin trading system. In the dedicated Sharia compliant platform, which we have offered to the Roshan Digital Account investors, there are certain restrictions that are imposed by the Sharia advisor, which includes that nobody can trade or buy in Sharia non-compliant companies. No one can trade in futures, derivative market, or securities lending and borrowing market. No sale can be made without possession, because in Sharia, if something you currently do not own, you cannot sell it. Similarly, no trading in the preference shares. And in case you have a Sharia non-compliant companies and you earn some dividend, you have to charity those dividend in the exercise of income purification. And in case you are holding a Sharia non-compliant companies, there is a certain criteria agreed by the
Sharia advisors that, for instance, within 6 months you can hold that stock until and unless that stock has reached its cost of acquisition, or in case it is still in the profit, you can sell that stock in the market, because its status has changed from Sharia to non-Sharia compliant. So the criteria in which we assess the listed companies, whether they are Sharia or non-Sharia, we see the nature of the company. By nature, the business should be Sharia compliant. And if the business is Sharia compliant, we also see that how much non-Sharia compliant debt, and in comparison to the total assets they have taken. So the ratio, the threshold is currently 37%. If the ratio is within 37%, the company is compliant, provided the ratios are met. There are also ratios including the investment ratio, non-compliant income ratio, illiquid issues. They are all set by the Sharia advisors and approved by the SECP in its Sharia governance regulations. However, Sharia governance regulation do provide an exception rule to the Sharia advisors, because there might be unique circumstances specific to some companies where, from case to case basis, Sharia advisor may give approval or fatwa to the Sharia compliance despite ratios are not being met. So there is also an exception rule which is provided to the Sharia advisors in terms of defining the Sharia status of companies. So that's all from my side in terms of products and services. Now I will like to respond to any question if you would like to have. All right, thank you very much. Let's move on and have Mr. Jawad Hashmi Saab share with us his insights in the market and Sukuk, as well as overall Sharia compliant options available at the exchange. Jawad Saab, over to you. Thank you very much, Fahad, and thank you very much to all the organizers and the audience. I would quickly switch to the Sukuk at offer at Pakistan Stock Exchange. This journey started back in 2023 December, and Alhamdulillah has been very successful. I believe that a balanced portfolio should have both the elements, the equity and the fixed income. In the fixed income alternative, we have this Ijara Sukuk structure, which is backed by the government of Pakistan, and it is a Sharia compliant Ijara structure, very popular. I would quickly touch upon the key features, characteristics of these Sukuk at offer. As Mr. Sabwari mentioned, there is only, the minimum amount an investor can begin with is 5,000 Pakistani rupees. The tenor at offer stretch from 1 year till the 10-year period. For ISME, we have three variants, 3 maturities, 3, 5, and 10 years, with both the options of fixed rate rental and variable rate rental. The rental frequency is biannual, except for the discount Sukuk, which are, as we know, issued at a discount to the face value and mature at the face value. In the discount, we have 2 variants, 1 year and 10 years. And as I said, in the fixed rate and variable rate, we have 3, 5, and 10 years. To invest in this product, the Sukuk, you do not need to have any separate arrangement, any special account to be opened. It can be done through the same Russian equity investment account, which you do have. If you do not have, it's a very simple process where you can visit any of the scheduled bank's portal or website or the app, and then start the process
It takes a very little time on the portal itself. By a few clicks, you can open your Russian equity investment account. Now, I had mentioned there are tenors from 1 year till 10 years, but that does not mean that once you invested, you cannot liquidate. We have the secondary market, alhamdulillah, quite active, where all these Sukuk are listed and frequently traded in the secondary market. If an investor bought a 5-year Sukuk, and after a few months or even weeks, if he or she wishes to liquidate, there is a secondary market available at PSX, and Sukuk can be traded in the similar manner as any share is traded. In terms of the retail participation, that has still been a little low, but it has been picking up. And one of the reasons we are focusing on this product in this session is to create the awareness of this Sharia-compliant, sovereign-backed Ijara Sukuk, which is at offer and have attractive rate of return. If we can move on to the next slide, I will show you a few key statistics. Can we move to the next slide, please? Okay. Well, if there is any issue with the slideshow, that's okay. We are there. So as Sabzari Sahab also mentioned in his initial remarks, there are over 4.5 trillion worth of Sukuk which have been issued so far, and at the moment the outstanding amount is over 4 trillion. The auction takes place once in a month. The last one we had on the 21st of January, and the next one is the day after, on the 6th of February. So if you do have a Russian equity investment account, please get in touch. And if you wish to participate, you have both the options: competitive bid and the non-competitive. Competitive, you compete for the rate. So whatever the cutoff comes. Jawad sir, if you don't mind me cutting you off, your voice is a little bit choppy. So we have gotten a response that you perhaps want to maybe bring your laptop closer or the earphones that you're using. I'll just try to get rid of my microphone. This is better. Thank you. Is it better? Ji. Sure, great. Good. So, so here are a few stats. As I was saying, the next auction is on the 6th of February. So there are two options, either to go for the competitive bid or the non-competitive bid. The amount is from 5,000 and it's multiples. So you can put in the investment accordingly. I was speaking about the secondary market liquidity, where you have the option to liquidate this investment whenever you want. So it is relevant to mention the current average volumes at PSX, which are over 4 billion every day. So that's also encouraging. And if we move to the next slide, it is the process of onboarding you as a Russian equity investment account holder. Good, we are there. So it's very simple, few steps process where you go on to your bank's portal or an app and select the invest in stock market option. Provide your consent to the bank to share your information for the brokerage account opening. You will be presented with an option to agree to a disclaimer and an agreement to the terms and conditions. If you agree, the next option is to select the brokerage house. We have 205 licensed brokers at the moment. Most of them are offering Russian digital account, Russian equity investment account also. So you select the brokerage house, deposit the funds in your Russian digital account,
select the custodial option, which is the CDC Direct Settlement Services. They are custodians of your funds and your shares or Sukuk, which you bought using that portfolio. And that is available to you all the time. And so that here you go. So this is for the this is the simple onboarding process and for you to start your investing journey as an NRP, non-resident Pakistani. I would just end here and will wait for any questions if I can answer. If I cannot, I'll try to find that. Thank you very much. Thank you, Fahad. Over to you. So thank you very much. There are a couple of questions. I think let's just take the one that is not directly related to it, but there's a user who asked about the IPO process, how a company can be listed on the stock exchange. Maybe you can touch upon it real quick so we can move on towards the question related to the topic. The listing of the company, that is a process of capital formation that is different. I think probably somebody's asking how to invest in the IPO, right? So being a Roshan Digital account holder, similarly, you need to use the e-IPO application of Pakistan Stock Exchange or the Central Depository Company. But since, as I said, your funds and your custody is through the CDC and you can participate in IPO through the same account, that should not be an issue. So there's another question which I did not really understand completely, but if a person already has an account with a brokerage firm, can they open a CDC direct account? They're asking if there is any way that we can do that, or should they even do that in the first place? So if you do have a brokerage account and you are a resident Pakistani, then you do have a sub account and you can still open your own individual investor account. But if you have a Roshan Digital account, your investor account is already opened in the CDC, and that is used for the movement of shares from your account or into your account. All right, thank you very much. So as we mentioned in the beginning, that we'll be taking the questions towards the end of the program. So I think we should keep on receiving the questions and move on towards the next speaker. So thank you very much, Javasa, for a detailed insight to the product, the Sharia market. Let's move towards Mr. Ahmed Ali Siddiqui Saab, who's Group Head of Sharia Compliance at Mizan Bank. He'll talk about Sharia principles in finance, RDA account, etc. Sir, can you please share your presentation with us? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And is it visible? Yes, sir. You may continue. Okay. Thank you, Fahad, and Assalamu alaikum, everyone. And thank you for Pakistan Stock Exchange for inviting me today. I'll be speaking quickly about the Sharia compliant investment guidelines and rules that we follow when we make an investment in a Sharia compliant equity, Sukuk, or any other Sharia compliant asset class. So just to revise the rules that we follow when we go for Islamic investing, the objective is fair and equitable distribution of wealth in society. And in this process, we avoid all transactions that are based on interest or that are speculative or gambling based transactions. There are certain transactions which are uncertain income, which we call gharar, like short selling, future sell. So we avoid all these transactions, and we also avoid contracts and agreements which are not according to Islamic commercial law, or which are impermissible or has some clauses which conflict the Islamic rules. Sharia compliant investment is also about ethical investments, profit and risk sharing modes, and asset-based financing. It means that the Sharia compliant investors avoid speculative and artificial financial instruments, and they just stick to the basics, and they take risk, they share the returns, and they find out ethical and Sharia compliant avenues. The purpose is to fulfill the halal and permissible customer needs when they invest, and that it is also
a responsibility of the company that is taking the Sharia compliant investment to ensure the Sharia compliance is followed and the rules are followed. The key concept that we follow in when we invest according to Islamic guidelines, that we primarily avoid all interest-based investment and returns. And the Quran says in Surah Baqarah, and Allah has permitted trade and forbidden riba. So it's a very clear guideline from the Quran that Allah has permitted trade and investment, but Allah interest and interest-based avenues. And there are a couple of hadiths related to this concept. And there's one hadith where the Prophet ﷺ has condemned the one who receive and pay interest, the one who records it, and the one who witnessed to the transaction. And just to add, what is the definition of interest or riba? It's a very simple definition, which is narrated by Hazrat Ali Razillah Ta'ala, that any debt which pulls any kind of gain or benefit, that benefit is riba or interest. So if I give 100,000 rupees or I invest 100,000 rupees in a contract of loan, and I am getting an additional amount of 10,000 over that loan or debt contract, that becomes interest, or that become impermissible gain. And this is not only impermissible in Islamic law, but all Abrahamic religion actually do not allow interest-based earning. So what are the Sharia compliant avenues that we have? One can earn by way of profit generated by sale and purchase of assets, goods, commodities. In terms of capital markets, this could be shares, permissible shares, sukuks. Rental income generated by fixed assets is also permissible. And sukuk is also, ijara sukuk that Jawad mentioned, is also a form of rental income instrument where the investor invest in certain real estate assets owned by the which were owned by the government, and they are sold to the sukuk holders, and the government is paying rental income or ijara rentals on those assets. You can also invest on the profit and loss basis in companies, just like shares. You can also invest in Islamic partnership modes with Islamic banks. You can invest in sukuk and at the Pakistan Stock Exchange. There are a couple of sukuk options: corporate sukuks, government sukuk, green sukuk. You can invest in shares which are in the permissible category. And the investors can also invest in the government Islamic Naya Pakistan certificate. It's again a partnership-based mode that is introduced by the government, and it is offered in 4 different currencies. You can also invest in Islamic mutual funds, Sharia compliant ETFs, and Islamic REITs. And one good thing about when we talk about Sharia compliant investment avenues in Pakistan, the regulator of State Bank or SECP, they have put in place a strong governance framework. So when the sukuks are issued, they are reviewed by Sharia experts. When a mutual fund is issued Islamic license, there is a Sharia board or Sharia scholars monitoring those. And similarly, when Islamic banks or the other Islamic asset class that are available in Pakistan, there is a strong governance framework which ensures that these assets remain Sharia compliant. In terms of the stock market, although I think Adnan Amir has mentioned, but let me just repeat that if you are dealing in the stock market, you are buying and selling permissible shares, it's permissible, but you have to be very careful that you have to take the delivery before selling it. So day trading is not permissible. Now the system is shifting to T+1. So after that T+1 system, you can sell the share next day when it is available in your CDC account. You can invest in Sharia compliant IPOs. You can invest in the stock market for the purpose of trading or capital gains, or you can also invest in the stock market in the Sharia compliant share for the purpose of getting dividend. So this is a permissible asset class. However, you have to avoid futures, forward derivatives, short sale, interest-based margin financing because they are not according to Islamic principles. Just a quick, if you want to invest in Pakistan Stock Exchange, one mechanism that Mizan offers is offering the Russian digital account, which is your gateway to Sharia compliant investment in Pakistan. These accounts are open in a click of few clicks. You go to the website of Mizan, you can select your account, and you can fill in the form, provide the details, agree to the terms and condition, and your accounts are activated in 48 hours. After that, you can open a CDC account through the website of Mizan Bank. You can accept the terms and condition online with few clicks. You can select your broker and you can open a broker account.
And now you are ready to invest in Sharia compliant shares. You are ready to invest in Sharia compliant IPOs and Sharia compliant Sukuk that are listed in the Pakistan Stock Exchange. And one good thing with the Roshan digital account, that you can invest in Pakistan and you can repatriate the funds out of Pakistan if you're coming through Roshan digital account and you're investing in the Roshan digital equity or through this mechanism in the Sukuk structures. There are two Sharia compliant indexes available in the stock market. You can go to the Pakistan Stock Exchange website and you can see the list of shares. I think almost 50% of the equities are Sharia compliant, but in terms of volume, the market share of Sharia compliant shares is sometimes close to 80% on a daily basis. And at a glance, you can perform your all activities through Roshan digital account. You can invest, you can earn Sharia compliant returns, and you can contribute toward the in your growth objectives and in the growth of Pakistan. So I'll just finish my talk here, and if there's any question, we can answer it at the end. Thank you. Thank you very much for sharing the presentation. We'll hold on to the questions for now, so that we can take them towards the end. We do have a few questions for you, Ahmed Saab. I'd like to hold on to them for now. Moving on, Mr. Farhan Rizvi, who is a country head sales at JS. Let's have you share with us some information about the brokerage perspective, the opportunities, the trends, as well as the Sharia compliant stocks that can be acquired, through the brokerage firm or any firm for that matter. Thank you so much, Fahad. Thank you for inviting me. Majority of the details has been shared already. तो मैं बस थोड़ा सा introduction कराऊंगा about JS Global and what services we are providing. Again, जो overseas पाकिस्तानी हैं वो RD accounts खोल सकते हैं investment करने के लिए. सैकड़ा accounts available हैं वो खोल सकते हैं. इसी तरह इनकी money repatriation जो है वो easily manage हो सकती है. सेकेंडली जो जेएस ग्लोबल ने रिसेंटली लॉन्च किया है, इट्स अ शरिया कंप्लाइंट ट्रेडिंग टर्मिनल जो कि कम्प्लीटली सिर्फ और सिर्फ शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स की ट्रेडिंग अलाउड करता है. आप इसी टर्मिनल के थ्रू मरहबा फाइनेंसिंग भी मैनेज कर सकते हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट है, और यही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको कम्प्लीटली सिर्फ और सिर्फ स्टॉक जो शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स हैं उनकी ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. Some of the basic thing I want to add here, जो normally लोग mistake करते हैं when they are planning to invest with RDA या सैकड़ा accounts, people try to think कि वो custody जो है वो broker के पास होती है. So वो actually वो broker नहीं होता, वो custodian services के पास ही होती है वो services, और वो आपकी कस्टडी होती है. इट्स सिक्योर कस्टडी. जिस तरह आप कस्टोडियन अकाउंट्स आप खोलते हैं सीडीसी में, इसी तरह वो कस्टडी बाय द एंड ऑफ द डे ब्रोकर के पास से चली जाती है, एंड द सीडीसी होल्ड्स दैट कस्टडी, सो योर कस्टडी विल रिमेन विद द कस्टोडियन. I think these are the one of the finest option जो कि PSX ने लॉन्च किए हैं पास्ट ईयर्स में, जो कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान के लिए कॉन्फिडेंट देते हैं, जिससे जो है वो मार्केट में उनका पार्टिसिपेशन ईजी हो सकती है और उनकी रिपैट्रिएशन भी ईजी हो सकती है. दीज आर फ्यू स्क्रीन्स अवेलेबल, यू कैन सी दैट. ये टर्मिनल है जिसमें आप स्टॉक स्क्रीनिंग कर सकते हैं. रिसर्च पोर्टल अवेलेबल है. ये तमाम का तमाम आपको रिसर्च प्रोवाइड करता है ऑन वन क्लिक. यू हैव ऑल द डेटा ऑफ द स्टॉक मार्केट ऑन वन क्लिक. So you can see all the information that is related to any investment decision you gonna take. So ये कुछ सर्विसेज हैं जो जेएस ग्लोबल प्रोवाइड करता है मार्केट रिसर्च से रिलेटेड, आपके अपने डिसीजन को बेहतर बनाने के रिलेटेड. तो जेएस ग्लोबल की ये प्लेटफॉर्म आपको आपकी आईडी पे भी अवेलेबल हो सकता है, दो यू हैव एन अकाउंट और यू डोंट हैव एन अकाउंट. It doesn't matter. You can just download the application. You can see all the data, all the information, all the research from that portal, and this is what we can provide as a broker to the foreign participants who are willing to invest in Pakistan stock market. Any question, anything, I would be love to answer. Thank you. Thank you for answer for the details. Let's just again hold on to the questions for now.
let's move towards Mr. Imtiaz Gadar, who is the CEO of Mizan Investment Management Limited. Sharia compliant investment funds and savings products are some of the things that we need to discuss and share with our overseas Pakistani. So let's have you share your presentation. Thank you so much, Fahad. I will just put on the presentation, but presentation से पहले just थोड़ा सा एक background. Obviously, हमने अभी तक सारी discussion जो की has been about the direct investment in the stock market, which is obviously a very attractive proposition for a lot of people. But उन लोगों के लिए जो या तो इतना टाइम नहीं रखते या उनका की काम ये नहीं है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, उनके लिए obviously that's where institutions like Al Mizan come in, where we offer you the route to do it via mutual fund, जहां पर जो है वो सारे इन्वेस्टर्स अपने पैसे पूल इन करते हैं और हमारी प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट टीम उसको मैनेज कर रही होती है। तो अलमीजान इज आल्सो वन ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस जो पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए, जो खुद डायरेक्टली इक्विटी में या तो एक्सपोजर लेने का टाइम नहीं रखते या एक्सपर्टीज नहीं रखते, उनके लिए हमारी सर्विसेज होती हैं। तो मैं आपको बड़ा क्विकली जो है वो अलमीजान पे एक रन थ्रू कर देता हूँ, सो दैट यू हैव सम आइडिया ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। Fahad, let me know when my screen is visible. Fahad, is my screen visible? Yes. जी सर। Okay. तो बस जैसे मैंने बताया कि अलमीज़ान इज, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे अलमीज़ान का प्रोडक्शन परफॉर्मेंस और आरडीए पे, क्योंकि बहुत सारी बात हो गई है तो आई विल नॉट टॉक टू मच अबाउट दैट। बट अलमीज़ान का जैसे बहुत सारे आप में से लोग अवेयर होंगे कि द होल मीज़ान ग्रुप इज अबाउट दिस विजन कि मेकिंग शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट अ फर्स्ट चॉइस फॉर इन्वेस्टर्स। एंड अगेन इसमें हमारा मिशन वगैरह भी है, बट मैं इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इट्स अ वेरी इंस्टीट्यूशनल बैक्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें मीज़ान बैंक, अहमद अली सिद्दीकी साहब यहाँ बैठे हुए, 65% इज owned by Mizan Bank, 30% is owned by Pak Kuwait, and then 5% is owned by other shareholders. जो हमारी स्ट्रेंथ्स है वो ऑब्वियसली हमने यहाँ पर मेंशन की हुई है, बट मैं जो हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है वो ऑब्वियसली इज द शरिया बैकिंग दैट वी हैव। तो जहाँ मुफ्ती इमरान उस्मानी साहब इज द शरिया एडवाइजर दैट वी हैव, बट वी हैव हाइलाइटेड द होल इकोसिस्टम कि जिससे वो बिलोंग करते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उनके पीछे जो सपोर्ट है, हमारी जो शरिया ओवरसाइट है, दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट लेंड्स अस द मोस्ट क्रेडिबिलिटी। और यही वजह है कि मीज़ान अल्हम्दुलिल्लाह इज द गो टू प्लेस फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर शरिया कंप्लाइंट ऑप्शंस। ये थोड़ा सा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हम बड़ा एक प्राउडली मेंशन करते हैं कि ऑल्दो पाकिस्तान का भी बैंकिंग सिस्टम जो है, फारूक सफजारी साहब ने शुरू में बात की कि पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम 2 साल बाद इस्लामिक होगा। आज प्रिडोमिनेटली इट्स अ वेरी कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट हैज बीन एबल टू grab the number one position in this market, despite the fact कि मार्केट जो है प्रिडोमिनेटली कन्वेंशनल। थोड़ा सा हमारे मार्केट शेयर का है कि हम जो है ओवरऑल मार्केट का 16% है और उसके साथ हम नंबर 1 प्लेयर है, और इस्लामिक में तो ऑब्वियसली वी आर द नंबर 1 प्लेयर विद 32% मार्केट शेयर। एक और हमारा प्रोडक्ट है जो कि पेंशन की साइड पे है, विच वी फील इज समथिंग दैट कंट्रीब्यूट्स टू द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द मार्केट। तो उसमें भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मार्केट शेयर इज ऑन द हाईएस्ट साइड विद इन द इंडस्ट्री। थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं, ऑब्वियसली सुकूक्स की बात हुई, स्टॉक्स की बात हुई, अगेन जो वो है अपना जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अगेन ये वो सारे व्हीकल्स हैं जो आपको इन सारी एसेट क्लासेस पे एक्सपोजर लेने के लिए दे प्रोवाइड यू द रूट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, के जहां पर अगर आपको डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं लेना चाहते तो अगर मीज़ान के पास एक इक्विटी फंड्स का भी पूरा एक बुके है, जहां पर ना सिर्फ आप ये कि एक्टिव इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक्सपोजर ले सकते हैं, बल्कि अगर सिर्फ सेक्टर स्पेसिफिक भी आपको इन्वेस्ट करना हो तो मीज़ान एनर्जी फंड इज वन ऑफ द ऑप्शन। इसी तरह हमारे पास फंड ऑफ फंड्स भी हैं। इनकम एंड मनी मार्केट साइड पे अगेन वन ऑफ आवर फंड्स अल्हम्दुलिल्लाह विद 250 बिलियन प्लस AUMs इज द सिंगल लार्जेस्ट फंड इन एनी कैटेगरी इन पाकिस्तान। तो हम फिक्स इनकम साइड का भी जो एक्सपोजर है, अगर आप सुकूक की मार्केट को और फिक्स इनकम की मार्केट को डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं लेना चाहते, तो देन यू कैन लुक एट दीज व्हीकल्स टू टेक पार्ट इन। फाइनली मैं बस एक स्लाइड वो करूंगा कि क्योंकि हमने सारा सेमिनार इज अबाउट हलाल इन्वेस्टमेंट्स और PSX के साथ हम कर रहे हैं, तो एक बड़ा एक मिथ है कि हलाल इन्वेस्टमेंट्स अगर मैं करूंगा तो मेरे रिटर्न में मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट डेटा जो है वो इसके बरक्स कुछ बताता है कि 17 साल से KMI 30 इंडेक्स एग्जिस्ट करता है। उस 17 साल में 10 साल जो है KMI 30 ने आपको KC 100 से ज्यादा बेहतर रिटर्न दिया है। और अगर मैं ओवरऑल केगर की भी बात करूं तो ओवरऑल केगर भी जो है वो KMI 30 का सबसे हाईएस्ट है सारे इंडेक्सेस में से। सो ये जो एक मिथ है कि अगर मैं इस्लामिक इन्वेस्टमेंट करने जाता हूं तो मुझे कुछ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो एटलीस्ट PSX की हद तक तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एंड इनफैक्ट यू हैव एंडेड अप मेकिंग मोर मनी। इसके साथ हमारे अपने फंड्स की हिस्ट्री भी है, बट आई विल नॉट ड्वेल टू मच इनटू इट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। और आरडीए का अगेन मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो काफी डिटेल में जवाब ने और कुछ हद तक अहमद साहब ने बता भी दिए। सो दैट इज माय बिट एंड ओवर टू यू फाद।
Thank you very much. Moving on, let's have Mr. Altamash Janjua, who is the Trade and Investment Counselor in Toronto. If you could please share some words with us, because we are very thankful that you took this initiative with us, and we are finally reaching out to the Canadian the Pakistanis who are living there. So I think this is a good opportunity for everybody to expand our reach for all these people who we haven't sort of touched before. So kindly, if you could share your words with us. Before I hand over to Mr. Altamash Janjua, Trade and Investment Counselor, there was a question from one of the participants here that as a Canadian resident, if somebody invests in Pakistan and God forbid if he is, subjected to some brokerage fraud, so what are the guarantees or remedies available to him or her? So I would request the Pakistan Stock Exchange management, which is sitting here at the highest level, that if they can very kindly explain the safeguards and mechanisms against any such, possible fraud or misconduct. So first up, if you allow, I'll just thank you. Please, you may proceed. Okay, I think there's a delay in the speech. Is it only me who is experiencing it, or is it with you as well? I guess so. Okay, so now I think it is sync. Yeah, it was Now, moment, in terms of, so that's a very pertinent question, and that's one reason why an investment at stock market is better than any other platform, because the regulation, I mean the stock exchange, as I said earlier, also it does not guarantee you returns. What it does is to provide you with the regulations, which means that all the transactions taking place here are following certain set of rules and policies, and that are ensured not only by the stock exchange but the apex regulator SECP also, who monitors these activities. Now, all these brokerage houses, all these firms are licensed and are overseen by both the Pakistan Stock Exchange and the SECP. In terms of the RDA, I think that risk is quite mitigated. Why? Because all your custody and your funds, as I think Farhan was also mentioning, they are not there with the broker at all. They are with the central depository company. So that safety net is available in the Roshan Digital account. Still, if there are any disputes in terms of the transaction execution, we have forums here where the complaints are received, thoroughly investigated, and there are arbitration panels which literally are available all the time to help in settling the dispute, any dispute between an investor and the broker. So thank you very much, sir. Thank you very much indeed. Over to my Trade and Investment Counselor, Mr. Altamash Janjua. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, sir. First of all, on behalf of the Council General Sahab, I'm really grateful to the whole leadership of the Pakistan Stock Exchange. Your presence here shows the motivation and endeavor that you're taking to boost this exchange. In particular, I'm very grateful to the CEO, Farooq Saab, because I contacted him on LinkedIn with this idea, and he was so prompt and in his reply and everything. So we were able to pull together this webinar, which, as per my information, is the first of its kind by any consulate, and hopefully first of many. So we already have interest from other consulates, and hopefully this tradition is going to continue. So we're really thankful to the leadership of the Pakistan Stock Exchange. We're very grateful. I'm also very thankful to the representation from Mizan Bank and GS Global for elaborating and showcasing the performance of their own funds, and in particular the Pakistan Stock Exchange. The whole purpose of this webinar was to connect our diaspora with options back home where they can safely and Sharia compliantly
invest and have peace of mind. So I'm very grateful to everybody who's here and to everybody who's joined us. Thank you very much. Raja Saab, thank you very much. मैं सिर्फ एक तो, if you don't mind, because I see a few comments which are relevant for us to speak on at PSX. एक तो the fact, or I'm also noticing a lot of people will comment कि जी उर्दू में क्यों नहीं हो रही. तो ये उर्दू में भी हो सकती है और अगली दफ़ा इंशाल्लाह हम उर्दू में मिलेंगे आपसे. आज हम थोड़ा मिक्स मिल रहे हैं इंग्लिश और उर्दू में. एंड यस, आई हियर यू व्हेन यू से अगर उर्दू में होता तो बेहतर होता. इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम उर्दू में भी कर लेंगे. एक दो चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए समझनी. आईपीओस की बात लोगों ने बात की, हाउ डू यू इन्वेस्ट इन द मार्केट, और क्या मेरे पैसा या सरमाया जो है वो सेफ है इन द हैंड्स ऑफ अ ब्रोकर और इन द हैंड्स ऑफ द पीएसएक्स. मैं एक दो चीज़ें आपको ज़रूर रिमाइंड करूंगा एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. ये आपका काम ज़रूर है कि रिसर्च आप करें कि आप किसके साथ बिजनेस करने जा रहे हैं. तो वो ब्रोकर कौन है उसको आपने देख लिया है, उसके ऊपर रिसर्च आपने की है. डू दे हेल्प यू इन योर इन्वेस्टमेंट एंड योर थिंकिंग प्रोसेस. उनकी अपनी प्लेटफॉर्म पे रिसर्च अवेलेबल है, तो उसको पढ़ के आप आगे बढ़ सकते हैं. अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उनसे पूछ सकते हैं, और पढ़े लिखे लोग हैं उनकी टीम में जो आपको गाइड कर सकते हैं. तो ये ज़रूरी आपके लिए करना है. उसके बाद पैसे में अगर नुकसान हो गया क्योंकि आपने ब्लाइंड फोल्डेड कोई काम किया है, जस्ट बिकॉज आपने कहा अच्छा जी मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं भी इसमें कूद जाता हूँ, कोई भी स्टॉक ले लेता हूँ, ऐसे नहीं होता. देन यू विल रिग्रेट. सो थोड़ा मेहनत आपको खुद करनी है रिसर्च करने पे. और हमने ये जो अभी वेबिनार किया है, जेएस ग्लोबल भी हैं, मीज़ान बैंक हैं, मीज़ान एसेट मैनेजमेंट है. हम किसी को फेवर नहीं कर रहे, ये भी एक कमेंट आया. They were just partners in this process of awareness raising for our diaspora. And having said that, they are some of the largest players, if not the largest, which is Mizan Bank in Islamic Bank and Al Mizan Investments in Asset Management. तो ये दोनों largest हैं इस category में. And JS is one of the top 3-4 brokers in Pakistan. और research भी है, वो भी करते हैं, आईपीओस भी करते हैं, कंसल्टेंट्स टू दी ऑफर भी होते हैं. सो दे हैव अ होल प्लेटफॉर्म अवेलेबल. बट वी आर नॉट सेइंग कि जी यही हैं लोग जिनके साथ आप काम करें. रिसर्च खुद करें, अपना माइंड खुद बनाएं कि क्या चीज आपने इन्वेस्ट करनी है और किसमें करनी है. जहां हेल्प की जरूरत है वहां पीएसएक्स इज ऑलवेज अवेलेबल, ऑलवेज अवेलेबल. हमारी वेबसाइट बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो गई है, उस पर हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, रिसर्च अवेलेबल है, हर चीज एट द क्लिक ऑफ अ बटन. ये सब आपके लिए है. So please use it. Thank you very much. Thank you, sir. So it's my pleasure to announce that some of you have already noticed that Mr. Nadeem Naqvi sahab is with us today in this webinar. He is the non-executive director of Pakistan Stock Exchange and previously served as the managing director of PSX from 2011 to 17. And under his leadership, PSX achieved significant growth and modernization. We would, sir, love to hear a few words from you. हम हमारे साथ please share कीजिए your So thoughts on this program. he's our Canadian representative on PSX on the board, and he's run PSX for quite a few years. So welcome. Thank you very much, Nadeem Sahab, for taking our time. Over to Thank you. you. Thank you very much, Farooq. Thank you very much, Fahad, and the team. It's honor for me being a Canadian Pakistani and also being a board member of the Canada-Pakistan Business Council. It is a great pleasure for me to be here. ये बड़ा अच्छा मौका है हाईलाइट करने के लिए कि over the last 4-5 years, there has been an increasing amount of interest by non-resident Pakistanis to invest in the capital market of Pakistan. Or Canada is a special case, and because I am a Canadian, so it's very close to my heart. Just for some of you who might be interested, I'll be back in Canada in the first week of March, and you can get my contact from the PSX, and I'm there for you just to chat about anything. मगर जहाँ तक मार्केट का ताल्लुक है उसमें फ़ारूक साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी. वो ये है कि देखिए बहुत सारे लोग आपसे कहते हैं कि इन्वेस्ट कर लें. बहुत ज़्यादा तरीक़ेकार होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, मगर मैंने ये देखा है जिन लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है
इकोनॉमी की या मार्केट की, तो उसका बेस्ट तरीका होता है म्यूचुअल फंड से शुरू करना। म्यूचुअल फंड्स में ये है कि वहाँ पे स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, और उसमें ये जो घबराहट लोगों को होती है मैं किस ब्रोकर के थ्रू जा रहा हूँ, उसने पता नहीं वो कौन से शेयर मुझे चढ़ा दिए हैं, क्या हुआ है, ये इनिशियल फेयर जो है ना ख़त्म हो जाएगा। जब म्यूचुअल फंड के थ्रू आप जाएंगे तो टॉप के म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, वेरी वेल मैनेज्ड। और म्यूचुअल फंड्स पाकिस्तान में अनलाइक इन द यूएस एंड इवन आई वुड से कैनेडा आर वेरी हैवीली रेगुलेटेड। They are regulated, they are audited usually by the big four major international audit companies, and their track record has been amazing. At the moment, more than 4.5 trillion rupees is managed by the mutual funds in Pakistan. तो म्यूचुअल फंड्स के प्रोडक्ट रेंज बहुत हैं, फ्रॉम equities टू डेट इंस्ट्रूमेंट्स टू इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपको चॉइस बहुत मिलेगी। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे PSX ने भी लॉन्च किए हैं कुछ नए इंडेक्स, और कुछ नए इंडेक्स लॉन्च करने जा रहा है। फॉर एग्जांपल एक हम जेंडर इंडेक्स लॉन्च करने वाले हैं, फारूक साहब की टीम उस पर वर्क कर रही है, विच इज़ फोकसिंग ऑन कंपनीज दैट गिव स्पेशल attention to women in the board, in the management and in decision making process. इसी तरह आमिर की टीम काम कर रही है एक ESG इंडेक्स के अंदर। तो जिन लोगों को क्लाइमेट चेंज और गवर्नेंस, इस तरह की सोशल एस्पेक्ट्स का इम्पोर्टेंस की उनको समझते हैं कि ज़रूरी है, तो वो भी इंडेक्स लॉन्च होने वाला है। जब ये इंडेक्स लॉन्च हो जाता है तो म्यूचुअल फंड्स इसकी बेसिस पे ETFs निकालते हैं। मेरा अपना सजेशन ये है कि ETF जो है वो सबसे ईजीएस्ट फॉर्मेट है to participate in a pool of securities or a basket of securities, easily sellable and easily bought। और म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स भी आप ले सकते हैं म्यूचुअल फंड से और बेच सकते हैं, मगर ETF इज मच फास्टर। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि अपॉर्चुनिटी सेट और टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स इंशाल्लाह ताला और भी बढ़ेंगे और ऑलरेडी काफ़ी पहुंच गए हैं। और मुझे याद है कि एक ज़माने में ये मार्केट जो थी, ये 2017 में व्हेन आई टुक माय अर्ली रिटायरमेंट had reached $100 billion. Aj, under Farooq's guidance, we see it as reaching $70 billion, and I'm very very confident कि एक आध साल में recross $100 billion, given the fact कि रुपये उस ज़माने में हुआ करता था मेरे ख्याल से 110 रुपीज़ पर डॉलर, अब 280 हो गया है। तो उसके बावजूद भी अगर $70 बिलियन है, आई थिंक इन रुपी टर्म्स इट्स ए ह्यूज ह्यूज थिंग। और अभी मेरा अपना ज़ाती ख्याल मुशाहिदा यही है, नॉट एन एडवाइस और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, मगर अपना मेरा मुशाहिदा ये है कि हैविंग बीइंग इन दिस मार्केट फॉर 30 ईयर्स, ये मार्केट साइकिल्स में चलती है, 5 से 7 साल का साइकिल होता है। अभी हम इसके दूसरे साल के अख्ताम पे हैं और अभी 3 साल इस मार्केट को इस साइकिल पे चलना है। तो अगर हुकूमत की जो पॉलिसीज़ इस वक्त हैं, जो मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी रहेगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो अंडर कंट्रोल रहेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो अच्छे रहेंगे, करेंसी जो है वो स्टेबल रहेगी, तो आप ये समझते हैं कि मेरा अपना ख्याल ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है रिलेटिवली स्पीकिंग इन डॉलर टर्म्स भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सो विद दैट आई विल जस्ट से थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, और सवालात जो भी हों आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह। थैंक यू नदीम साहब फॉर ग्रेसिंग अस विद योर प्रेजेंस टुडे। ये काफ़ी हमारे लिए एक वैल्यूएबल चीज़ रही। बिल्कुल सर, सवालात के जवाबात जानने के लिए लोग बेचैन हैं। देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो उसका जवाब मैं दे देता हूँ कि रिकॉर्डिंग क्या इसकी अवेलेबल होगी? जी बिल्कुल, हमारी रिकॉर्डिंग हम इस सेशन की अवेलेबल होगी चंद दिनों में, आपके साथ यूट्यूब के ज़रिए शेयर कर दी जाएगी। इसके अलावा फेसबुक पे ऑलरेडी हम लाइव जा रहे हैं, यू कैन a lot of people are watching it online, तो वो भी आप वहां से भी एक्सेस कर सकेंगे बाद में फेसबुक के थ्रू। इसके अलावा कुछ सवालात हमारे पास हैं कि कॉन्सेप्ट IPO का क्या है, किस तरह से जो है वो खरीदा बेचा जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि सवाल ये है कि क्या इसमें गोल्ड और सिल्वर की भी अवेलेबिलिटी है? स्टॉक्स में कोई ऐसे शेयर हैं जिसमें जिसमें गोल्ड और सिल्वर की अवेलेबिलिटी है? जवाब साहब, आई गोल्ड थिंक और में सर गोल्ड प्लीज। और सिल्वर ट्रेड करने के लिए इज अनदर एक्सचेंज कॉल्ड PMEX। तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में है गोल्ड और सिल्वर ट्रेडिंग एबिलिटी। सो दिस इज नॉट द एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज कमोडिटीज। कमोडिटीज की। सो मे बी यू वांट टू कंडक्ट अ सेशन इन उर्दू विद PMEX नेक्स्ट। बिल्कुल ठीक है। और इसी इसी के साथ सवाल की कंटिन्यूएशन ये कि हाउ टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी विच इज डूइंग एन IPO एंड नॉट लिस्टेड येट?
Well, the company, the only reason for an IPO is to get listed. So IPO जो है वो लिस्टिंग से पहले है. प्राइस को इस्टेब्लिश करने के दो रूट्स हैं, या तो बुक बिल्डिंग के थ्रू होती है या फिर एक फिक्स प्राइस के थ्रू आती है. हमारे पास दोनों एग्जांपल्स हैं. अभी हमने एक कंपनी सिग्नेचर रेजिडेंसी रीट के नाम से आई विच केम ऑन द फिक्स प्राइस. और अभी आपने एक रोज पहले गनी डेयरीज देखा जो कि बुक बिल्डिंग से आया. इससे पहले पाक कतर फैमिली तकाफुल वो भी बुक बिल्डिंग से आई. सो बुक बिल्डिंग और द आईपीओ जो है इट्स अ प्री requisite for a company to get to the listing and to invest in an IPO. एक जो रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर है वो बिल्कुल उसी तरह से IPO पोर्टल एज आई सेड अर्लियर ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और द CDC किसी पे भी जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. अकाउंट्स की अपने अकाउंट की डिटेल दे सकते हैं. द सफिशिएंट फंड्स शुड बी अवेलेबल देयर and that's how one can participate in the IPO similar to any other investor sitting here in Pakistan. Thank you. सर बहुत शुक्रिया. खलील साहब गालिबन कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर, काइंडली शेयर कीजिए. From one of the participants that what is the tax structure for non-resident Pakistanis on their investments in Pakistan Stock Exchange. So if you could kindly, one of the participants can elaborate on this. Tax incentive to nahi hai for foreign investors, be it Pakistanis or non-resident Pakistanis. सर टैक्स स्ट्रक्चर क्या है? करंट टैक्स स्ट्रक्चर क्या है? Current tax. So dividend. Sorry, go ahead. No, I'm sorry. In fact, the voice वो थोड़ा सा out of sync है, इसलिए वो मुझे लगा जैसे मैं अकेला ही बोल रहा हूँ. इसमें 15% flat है सर capital gain tax for the Russian digital account holder. So there's no complication there. It's full and final 15% CGT or any gain which is made in the shares listed at the stock exchange. I can see your hand raised, Mr. Fahad. I hope you can see it as well. जी, Ms. Gulzeba, would you like to ask a question? Please feel free. Ji, Assalamu alaikum everyone. Thank you so much. This was a great session, and I think it should be regularly organized, not for overseas Pakistanis, but for our Pakistanis also. I would like to know कि कितने लोग हैं अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, because I believe कि इन्वेस्टर्स का नंबर बहुत कम है जो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं compared to the other countries. And secondly, as we know that जब हम ख़वातीन की बात करते हैं तो बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि इफ़ यू टॉक अबाउट द वुमेन तो कमेटीज़ डालने के लिए सारी ख़वातीन जाती हैं, बट अगर हम उनसे कहें कि वही कमेटी आप सुकूक में डाल दें तो वो नहीं आएंगी उस साइड पे, राइट? सो how do we make the process so simple? Because I'm running few communities, I'm part of few forums, I'm in NBFCs, I'm on the board of Pakistan REIT Association also. So I want to know कि how to kind of make it so easy कि एक आम खातून जो है वो 10,000 की कमेटी की जगह 10,000 के सुकूक ले ले. और सुकूक का प्रोसेस एज फार एज आई नो उसमें एवरी मंथ मुझे उस सुकूक की ऑक्शन में जाना है एंड देन आई कैन पार्टिसिपेट. सो कांट वी ऑटोमेट द प्रोसेस कि मैं अगर 10,000 की इन्वेस्टमेंट हर महीने में करना चाहती हूँ तो वो 10,000 की इन्वेस्टमेंट मैं ऑटोमेटिकली कर सकूँ रादर कि एवरी मंथ मुझे एक हैसल ऑक्शन के हैसल में जाना है. सेकेंडली आई वुड लाइक टू नो कि हमने सिर्फ अभी तक 5 रीट्स क्यों बनाई हैं, हम इससे ज़्यादा उस पर क्यों नहीं जा सके? और क्योंकि रीट्स इज़ एन अदर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जिसका मेरा ख्याल है हमारी 90% आवाम को पता ही नहीं है, राइट? एंड thirdly I would like to know कि आपके जो मतलब how do you kind of जो सुकूक ऑक्शन हो गया और I think this is it. Thank you so much. मैं ज़रा I will take a few of those. वो 3 या 4 सवाल हैं. पहले तो मैं
एट द फोर फ्रंट हाईलाइट कर दूं। सबसे बड़ा इशू आपने खुद ही हाईलाइट कर दिया, विच इज द लैक ऑफ इन्वेस्टर पूल इन पाकिस्तान, वेरी राइटली एड्रेस। वो है इस वक्त 460,000 एट द मोमेंट। So जो investor pool है, it's 460,000 and that's 0.2% of the population. अगर आप सिर्फ श्रीलंका या बांग्लादेश भी देख लें, उसमें भी 1% of the population invests in equities. वजह क्या है? बहुत सिंपल है। हमारे यहाँ जो भी आपने इंस्टेबिलिटी देखी ओवर टाइम, ओवर द लास्ट से 20-30 years, उसमें equities, which is a risky asset class, ऑब्वियसली उसको टाइम लगता है, उसको स्टेबिलिटी चाहिए होती है, कुछ थोड़ा सा टेलविंड की जरूरत पड़ती है फॉर पीपल टू गेट कंफर्टेबल विद अ रिस्की एसेट क्लास। वो कंफर्ट हमें फाइनली अब थोड़ी सी नजर आनी शुरू हुई है in our diaspora, which lives in Pakistan, and also people like others who live abroad, because they are noticing the uptick and they're going, how do we participate? तो एक तो पहलू ये है कि हमने मान ली, बिल्कुल बात आपकी सही है, 4,60,65,000 हैं। अच्छी बात इसमें यह है कि पिछले साल 4 से 5,000 ऐड हो रहे थे महीने, और इस महीने अभी जो टोटल आया है वो है 10,000, सॉरी वो है 20,000, जो मैं अभी आपको जनवरी की आज शायद डिटेल्स आई हैं, वो है 20,000। दिस इज प्रॉब्ली द हाईएस्ट इट्स बीन इन अ वाइल। तो मंथली नंबर मेरा 14,000 भी रहा है, 12,000 भी रहा है, बट ये पिछले 12 महीने की कहानी है। 12 महीने से पहले जो कहानी है वो 4-5,000 हर महीने। सो वी हैव क्लियरली क्रॉस दैट हर्डल। वजह क्या है कि नंबर्स इंप्रूव हो गए कि अब हम 14,000 या 15,000 या जनवरी में 20,000 नंबर्स देख रहे हैं। वो दो तीन चीजें, एक इट्स अ मल्टी ईयर रैली जो शुरू हुई तो थोड़े से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आई थिंक व्हेन पीपल गॉट कंफर्टेबल। दूसरा एक बड़ा जो मुझे लगता है बूस्ट मिला इक्विटीज को भी और सेंटिमेंट को, वो जियो पॉलिटिकल था, आर स्टैंड्स जियो पॉलिटिकली, देन ऑब्वियसली द skirmish with India in May, subsequently जिस तरह the cards have been played geopolitically in terms of our relationship with people like Saudi, the US, China, you have it, ये चीजें भी प्ले कर गई, एंड इसलिए अकाउंट्स की जो एक टाइरेड है वो कंटिन्यू कर रही है ऑफ एडिंग अकाउंट्स टू द। तो हमने खुद ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कि हम भी 1% बनना चाहते हैं ऑफ पॉपुलेशन इन द नेक्स्ट 3 years। जो अभी नए कमीशन सेट हुई है एसईसीपी में, उसका भी ऑब्जेक्टिव यही है। वो कहते हैं हम मिलियन करेंगे इंशाल्लाह 1 साल में। सो वेर ऑल काइंड ऑफ जॉइंट एट द हिप। अवेयरनेस रेजिंग हो रही है, हम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज जा रहे हैं अवेयरनेस रेजिंग करने, एंड द रीजन वी आर डूइंग दैट इज 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 30, और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की जर्नी किसी ने आज तक उनको सिखाई नहीं है। जहां लिटरेसी लेवल्स कम होते हैं, हमने ये सीख लिया है आपको इंटरवेंशन डायरेक्टली करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। सो वी आर गोइंग टू दीज इंस्टीट्यूशंस एंड अट्रैक्टिंग द डायस्पोरा व्हिच इज अंडर द एज ऑफ 30। ये दो पहलू है। तीसरा, क्योंकि रीट के रेगुलेशन जब बन रहे थे तो मैं एसईसीपी में था, उसमें एक कंडीशन लगी, आप 3 साल तक प्राइवेट रख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसकी एक्सटेंशन लेते रहते हैं लोग, तो वो प्राइवेट है। अपेरेंटली द प्लेथोरा ऑफ एक्टिविटी इन रीट्स इज ह्यूज। आपको मुझे नजर इसलिए नहीं आ रहा कि वो रीट्स लिस्टेड कम है, और जिनको लिस्ट होना था 3 साल बाद, अभी उनकी अम्ब्रेला है बाकी। तो आई थिंक देर इज अ बिग, क्या मैं कहूँ, tailwind even in REITs in terms of listing activity। मुझे कहा जा रहा है कि 20 से 25 REIT जो हैं अनलिस्टेड हैं, जो तैयार हैं। सो लेट्स सी, आई थिंक दिस विल आल्सो कैच ऑन। आखिरी बात, इन केस जवाद साहब या एनीबडी एल्स वांट्स टू ऐड समथिंग, बट सुकूक की जर्नी आप 5,000 रुपए से ऑक्शन में नहीं, आप किसी भी दिन किसी भी ब्रोकर को कह सकती हैं कि आपको दिलवा दे सुकूक, वो मार्केट से लेके आपको दिलवा देगा। यू कैन स्टार्ट विद as little as 5,000 rupees एंड गो अप टू whatever your limit is। ठीक है जी, तो वो तो सेकेंडरी मार्केट से आपको कभी भी मिल जाएगा सुकूक, यू डोंट हैव टू गो इनटू द ऑप्शन। आई होप आई एड्रेस मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चन। अगर कुछ रह गया हो तो बता दें। जस्ट क्विकली मैं भी एक फरूख साहब ऐड जरूर कर दूं। जरूर जरूर। इन एडिशन टू सुकूक, जो जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, हमारे पास सुकूक बैक म्यूचुअल फंड्स हैं, तो आप उसमें किसी भी टाइम पे 1,000 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5,000 से भी कर सकते हैं, 10,000 से भी कर सकते हैं। सो अलमीज़ान हैज़ अ गुड मीज़ान सॉवरेन फंड विच इज़ बेस्ड ऑन, जो सुकूक में इन्वेस्ट करता है। तो आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली भी जा सकते हैं, और अगर वो कमिटी वाला कॉन्सेप्ट करना है कि निकालना आसान है डालना आसान है, तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इनडायरेक्टली सुकूक में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
और इसमें बस आपने एक चीज जी सर, गो और अहेड बस एक चीज ऐड कर दूं कि जो आपका एक होता है ईज ऑफ कन्वीनियंस वाला, तो एक एसआईपी प्रोडक्ट होता है, सिस्टमैटिक प्लान, जिसमें आपको ये सहूलत भी मिल जाती है कि आप पहले से डिफाइन करते हैं। तकरीबन मीजान बैंक के साथ तो हमारा बड़ा सीमलेसली कोऑर्डिनेटेड है, बट अब और बैंक्स भी कैचअप कर रहे हैं, जिसमें आप सिर्फ इंस्ट्रक्शंस अगर डाल दें कि हर महीने इतने पैसे इन्वेस्ट हो जाने चाहिए आपके इस पर्टिकुलर फंड में, तो वो पूरी जर्नी आपकी ऑटोमेट भी हो जाती है। तो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। एज आई सेड, म्यूचुअल फंड्स केटर टू ऑल ऑफ द पैसिव नीड्स, कि पैसिव इन्वेस्टर को जो नीड्स चाहिए, तो ये जो आप कह रही महीने के खुद इन्वेस्ट हो जाए, ये म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी से आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। और सॉरी, आपने एक बात की कमिटी की, हम खुद भी लगे हुए हैं इस एफर्ट में। आई थिंक द फर्स्ट पीपल वी मेट आफ्टर आवर फर्स्ट विमेंस डे विच वाज आफ्टर माय जॉइनिंग, बिकॉज मुझे अब साल और 2-3 महीने हो गए हैं। तो विमेंस डे पे किसी ने मेंशन किया अबाउट ऑब्वियसली द कमिटी, के हर नेबरहुड में बड़े बड़े फंड्स मैनेज होते हैं इन अ कमिटी दैट इज बेसिकली लेड बाय वुमेन, एंड एवरी ऑल दीज वुमेन इन दीज नेबरहुड्स पार्टिसिपेट। तो हम भी उस मेहनत में लगे हुए हैं, विच इज वाई आई थिंक वी मेंशन एक औरत स्पेसिफिक हम सहूलत अकाउंट पे काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि बिफोर विमेंस डे मार्च में हम वो अनाउंस भी करते हैं और इंशाल्लाह कुछ विमेन को पार्टिसिपेट भी कराएं। बट एम्फोसिस यही है कि विमेन पार्टिसिपेशन लिमिटेड है, ना सिर्फ मार्केट में एज इन्वेस्टर्स, बट इवन एज एम्प्लॉईज हमने नोटिस किया है कैपिटल मार्केट्स में औरत का जो सॉरी डाइवर्सिटी का हमारा कार्ड इतना अच्छा नहीं कर रहा। वी आर कॉन्शियस अबाउट इट एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। सिर्फ PSX की अगर आप एग्जांपल ले लें, तो अभी हमने अपना डे केयर फैसिलिटी शुरू की है, अब 3-4 महीने हो गए। आई नो दिस शुड हैव हैपेंड मे बी 10 years ago, but I'm just glad we're taking all those steps where you mention things which we've actually sat down together as a team and analyzed कि हमारी weak points हैं, इन पे हम काम कर रहे हैं। So thank you for pointing that out. But work is in progress. आपको औरत अकाउंट पे, सहूलत अकाउंट पे अच्छी खबर मिलेगी, होपफुली इन अ मंथ फ्रॉम नाउ। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। खलील साहब, कुछ आप ऐड करना चाह रहे हैं, काइंडली शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, एक मेरी रिक्वेस्ट थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से भी, और खास तौर पे जो हमारे बैंकिंग पार्टनर्स हैं, कि अगर कोई 1 मिनट की हमें एनिमेटेड वीडियोस मिल जाए कि हाउ अ पर्सन हु हैज अ रोशन डिजिटल अकाउंट, उसका क्या प्रोसेस होगा, जर्नी होगा टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन द स्टॉक एक्सचेंज, तो दोज वीडियोस विल हेल्प अ लॉट। तो अगर इस तरह कोई वीडियोस मौजूद है तो शेयर कर लें काइंडली, ताकि हम डायस्पोरा से शेयर कर लें। और नहीं अगर है तो खासतौर पर जो बैंकिंग पार्टनर्स हैं, मैं अब यकीन से कह सकता हूँ कि उन वीडियो से बहुत फायदा होगा। सर, वी हैव द वीडियोस एंड मटेरियल अवेलेबल। हम आपके साथ वो सारी चीज़ें जो ग्रुप में आप शेयर कर लेंगे, देन वी कैन परहैप्स और कुछ चीज़ें बनानी होंगी तो विल वर्क टुगेदर एंड मेक दोज। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। एक सवाल मोहम्मद अली साहब के लिए, अहमद अली साहब के लिए सॉरी, मौजूद है। वो है कि RDA होल्डर जो है, उनको अलमीज़ान में कर रहे हैं, जो उनको अलाउड नहीं है कि वो नॉन शरिया कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकें। तो इस पे थोड़ी रोशनी डालिएगा, क्या ऐसा है, और हाँ तो फिर क्या इसकी। जी बिल्कुल ऐसा है। और देखिए, यही तो इस पूरा सेमिनार का टॉपिक है कि शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना है। और नॉन शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट तो वैसे ही हमारे लिए बिलीफ सिस्टम के हिसाब से भी नाजायज़ हैं। और आइंदा जैसे भी फरूख साहब ने कहा कि पूरा सिस्टम ही कन्वर्ट हो रहा है, तो यस, एज आ शरिया कंप्लायंट बैंक, ये देखें एक और क्वालिटी चेक आपको नज़र आता है कि नॉन कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट्स जो इम्परमिसिबल हैं अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, उसमें मीज़ान बैंक या अलमीज़ान या कोई भी इस्लामिक बैंक इन्वेस्ट नहीं करता, ना उसको इस तरह से फैसिलिटेट करता है। थैंक यू। ओके, इम्तियाज साहब के लिए एक सवाल है कि रोशन पेंशन प्लान जो है VPS अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट्स का, वो सिर्फ 50% पोर्शन जो है वो इक्विटी सब फंड में अलाउ करता है। वाई वुड समवन इन्वेस्ट ओनली 50% इन इक्विटी व्हेन ही इज इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड लाइक 25 years? इसको फिर जो भी है, मैं इसको ऑफलाइन टेकअप कर लेता हूँ आपके साथ। बट अदरवाइज आई एम श्योर यू शुड बी एबल टू वर्क इट अराउंड, कि अगर हमारे सिस्टम में हमने कोई वो, क्योंकि उन इन्वेस्टर्स को भी देखना होता है जो बगैर इसकी अंडरस्टैंडिंग किए हुए कोई ऐसी एक्सपोजर ना ले लें। तो जिन्होंने भी ये क्वेश्चन रेज किया, उनको मेरी प्लीज कॉन्टैक्ट डिटेल्स पास ऑन कर दें, तो मैं उनको फिर इसके लिए फैसिलिटेट कर दूंगा कि अगर वो कस्टमाइज प्लान कोई चाह रहे हैं इसके ऊपर तो। ठीक है। इसके अलावा इम्तियाज साहब, एक और सवाल ये कि पाकिस्तान म्यूचुअल फंड्स हैव अ वेरी हाई टोटल एक्सपेंस रेशियो, highest in the region, especially of Almizan investments. Then there are FEL slash BEL, CGT, or the withholding tax. Is there anything being done to reduce this? देखिए, इसका तो जो वो है मैनेजमेंट फी वगैरह की जो चीजें, दे आर ऑल एज पर द रेगुलेशन।
ऑब्वियसली SECP इज देयर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, और ऑब्वियसली एक जो ये सर्विसेज पहुंचाने के लिए एक फेयर किस्म की रिम्यूनरेशन चाहिए उस सेल्स वाले को, जो आपने FEL की बात की कि ऑब्वियसली वो जो आपको सर्विसेज दे रहा है वो उसके अगेंस्ट एक FEL का हमारा चार्ज होता है। बाकी जहां तक मैनेजमेंट फी की बात है तो वो तो पूरे सेक्टर के लिए ऑब्वियसली इट्स रेगुलेटेड बाय दी SECP, और रिसेंटली लास्ट ईयर भी उन्होंने मैनेजमेंट फी कैप्स इंट्रोड्यूस कर दिए। So everyone is charging under those caps. So whether it be Al Mizan or any other AMC, they are all regulated by the rules of the SECP on those fronts. अच्छा, एक सवाल का और जवाब देते चलें कि अगर ज़कात की डिडक्शन ना चाहते हो कोई इन्वेस्टर, तो उस सूरत में क्या मामला होगा? तो उसका जो एक प्रोसेस है पूरा कि आपको एक डिक्लेरेशन जो देनी होती है, तो वो अगेन एज आई सेड आई कैन टेक दिस अप ऑफलाइन एंड फैसिलिटेट हूएवर नीड्स अ गाइडेंस ऑन दैट, बट उसका एक ऑब्वियसली एक एफिडेविट है जो आपको जमा कराना होता है। अगर वो मार्क हो जाता है आपके अकाउंट में टैग हो जाता है तो फिर आपकी ज़कात डिडक्ट नहीं होती। तो सर, द सेम थिंग गोज फॉर द RDA इन्वेस्टर्स एज वेल? जी, RD इन्वेस्टर्स के लिए तो ऑलरेडी हुकूमत ने जो सिर्फ अकाउंट बैंक अकाउंट की हद तक ज़कात को एग्जम्प्ट कर दिया है, यानी ज़कात उस पर डिडक्ट नहीं होगी, और वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उनको, बस वो अपने RM को बता दें वैसे। और उस पर कंपलसरी जो ज़कात डिडक्शन है वो RDA कस्टमर्स पे एप्लीकेबल नहीं है अगर उन्होंने इस्लामिक बैंक में अकाउंट खोला हो तो। बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि आप इस पे बात कर रहे हैं तो आप म्यूट हो गए फाद। जी जी, सॉरी। सो एक और सवाल है कि हाउ कैन आई बाय GIS थ्रू JS ग्लोबल एज इन अ सेकेंडरी मार्केट, यानी सेकेंडरी मार्केट में गवर्नमेंट इजारा सुकूक जो है वो उनको किस तरह से खरीदे जा सकते हैं? ये प्रोसेस अवेलेबल है जी वेबसाइट पे, हम आपसे शेयर भी कर देंगे सारी डिटेल के साथ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जवाब साहब, कुछ थोड़े से बेसिक सवाल आते हैं, थोड़े से स्टेप बैक बट चलेंगे इसमें कि अगर अगर आप इजाजत दें तो जी जी not specific to JS Global, but that is standard for all the brokerage firms. The way जैसे आप प्लेस करते हैं एक शेयर में ऑर्डर, बिल्कुल इसी तरह से आप अपने ब्रोकर को कांटेक्ट करते हैं। उससे जो इस वक्त करंट यील्ड है उस इंस्ट्रूमेंट की, जिस इंस्ट्रूमेंट में आपको इन्वेस्ट करना है, वो आप उनसे पूछते हैं। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर अब एक GIS पोर्टल, एक नया पोर्टल इंट्रोड्यूस हुआ हुआ है। वहां पे सेकेंडरी मार्केट में होने वाली तमाम एक्टिविटी इन दो सुकूक वो डिस्प्ले होती है ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, तो उसको आप देख के अपने ब्रोकर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, आप सुकूक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सॉरी, गो ऑन प्लीज फहद, आप कुछ कहना रहते हैं। सर बस कुछ सवाल आते हैं, आप क्योंकि गुफ्तगू फरमा रहे हैं तो बेसिक सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या ब्रोकर के साथ ही अकाउंट खुलवाना जरूरी है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट? जी देखिए, ये तमाम लाइसेंस एंटिटीज हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हैं, और उसकी एक वजह है कि वो क्यों रजिस्टर हैं। क्योंकि ये सारी सेटलमेंट, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज, आप सोचिए ना कि स्टॉक एक्सचेंज के लिए ये कितना मुश्किल होगा कि 5 लाख लोगों के साथ आपस में सेटलमेंट बनाए और अपने रेगुलेशंस को इंश्योर भी कराए। बिकॉज मार्केट, हमारा तो मिशन ही है ना कि एन एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट मार्केट प्लेस for the benefit of all the stakeholders, to ensure that we have and then to operate in this business you need certain skill sets, certain qualifications. So we have a very strict onboarding criteria for any participant coming onto the stock exchange to get the license. So to answer your question, like all other regulated stock exchanges, Pakistan Stock Exchange में भी आपको ब्रोकरेज हाउस से ही कनेक्ट होके शेयर्स की खरीदो फरोख्त आप कर बिल्कुल सकते ठीक हैं। है। एंड थैंक नाउ यू। व्हाइल वी आर एट इट, आप या फरहान साहब इस पे अगर बता सकें कि व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है। आपके पास अगर 200 रुपए हैं तो आप उससे 200 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो आप 5 लाख से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट की कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया। क्योंकि काफी कॉमन सवाल है, इवन दो कि हम जवाब देते रहते हैं इसका। जवाब साहब, आपसे एक और सवाल है ये कि टी बिल्स का कट ऑफ यील्ड्स के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। देखिए, टीम बिल के कट ऑफ यील्ड, देखिए अहमद भाई मुस्कुरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये शरिया कंप्लाइंट। तो
वो ठीक है। देखिए, टी बिल एक इंस्ट्रूमेंट है जो कन्वेंशनल मार्केट में बिल्कुल फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसका जो शरिया ऑल्टरनेटिव है, एंड प्लीज डू नॉट मिक्स इट विद द टी बिल बिकॉज द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, द फंडामेंटल्स आर डिफरेंट, एज आई कीप सेइंग इन अदर सेशंस आल्सो। यू नो, डेट इंस्ट्रूमेंट जो कन्वेंशनल में है, दैट इज अ लोन जो कि एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपसे तय किया जाता है, कारोबार जैसे भी करे, एसेट हो या ना हो, जो इंटरेस्ट तय है वो आपको देना ही है, जो कि शरई तौर पे ठीक नहीं है। लेकिन जो सुकूक का स्ट्रक्चर है, दैट इज बैक्ड बाय एसेट्स, so by buying a sukuk you actually buy an ownership of that asset which is linked with that sukuk, and that gets you entitled to the profit or the cash flow is to be generated from that sukuk. So it is totally different. जहां तक कट ऑफ की बात रही, तो कट ऑफ एक ऐसा अमल है जो एक एफिशिएंट रेट की डिस्कवरी के लिए जरूरी होता है, एंड दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, and whatever it is feasible, the cutoff comes. Now, since the government is managing this cutoff, so government has various other parameters in mind. कितने फाइनेंसेस की जरूरत है, किस रेट तक बोरो कर सकती है, उस मुनासिबत से एक कट ऑफ जो है उसका तयन किया जाता है किसी भी ऑप्शन में, जो टी बिल में होती है महीने में 2 दफा और सुकूक में सिर्फ 1 दफा। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा एक सवाल है कि अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो उस सूरत में पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज ने ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर दी है। आप अपने मनपसंद ब्रोकर के साथ ऑनलाइन अकाउंट खुलवा के अपने सरमायाकारी के जर्नी का आगाज कर सकते हैं। इसके अलावा एनी सुकूक वीडियो, यानी सुकूक पे आप जानना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको ये तमाम मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा फेसबुक चैनल, सारे सोशल मीडिया पे मटेरियल मौजूद है जिसमें पूरा प्रोसेस भी बताया गया है। सुकूक किस तरह से उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या क्या टेनर्स हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको हमारे सोशल मीडिया चैनल से मिल जाएंगी। अच्छा फहद, आप अचानक से म्यूट हो गए, तो मैं यहाँ पे वो इसका फायदा उठा लेता हूँ। एक हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना, अभी सीडीसी के प्लेटफॉर्म से जो इंट्रोड्यूस हुई है, इसका नाम है आसान कनेक्ट। अच्छा, आसान कनेक्ट में देयर इज अ वैरायटी, ऑल्दो इट इज इट इज फॉर द रेजिडेंट्स, बट ये है कि आप उसमें थ्रू द सेम टनल यू कैन एक्चुअली ओपन एन अकाउंट इन वेरियस मल्टीपल एसेट क्लासेस। तो वो उसको भी यूज किया जा सकता है, और उसका इट इज कम्प्लीटली डिजिटल। और जैसा आपने कहा कि ऑनलाइन ओनली, सॉरी, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग दैट इज अवेलेबल विद मोस्ट ऑफ आवर ब्रोकरेज हाउसेस। और जो जो स्टैट्स हम शेयर अक्सर किया करते हैं कि 80% अकाउंट जो हैं, हर 100 में से 80% से ज्यादा अकाउंट ऐसे हैं जो ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू ऑनबोर्डिंग होती है, और सिर्फ 10 से 15% जो है वो फिजिकल फॉर्म्स के थ्रू होती है। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। विद दैट वी हैव एड्रेस्ड ऑल द क्वेश्चंस। और इसके अलावा अगर कोई और सवालात आपके जहन में आए, या आपको लगे कि कोई चीज़ ऐसी है जो एड्रेस होनी रह गई, या कोई सवाल आपके जहन में रह गया, तो info@psx.com.pk पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इस वेबिनार के बाद किसी भी वक्त हमें ईमेल कीजिए, वी विल गेट बैक टू यू विद द रेलिवेंट आंसर्स टू योर क्वेरीज। और इंशाल्लाह इस ये जो सारा सिलसिला है ये भी इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे। आप हजरात अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो काइंडली कीजिए, सो दैट वी कैन मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द प्रोग्राम। फारूक साहब, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप बिफोर वी कंक्लूड? Any, thank you very much. Thank you everybody for participating. Thank you again, Consul General Saab and Trade Commissioner Saab, for your presence and for obviously approaching us, giving us time to present our case to the diaspora in Canada. Nadeem Naqvi Saab, thank you so much for participating. My own team members, Al Mizan, CEO, Mizan Bank, Ahmed Saab. Ahmed Saab has done brilliant work with us on GDS. Bahut bahut shukriya for always contributing and for your support. And obviously JS Global, Farhan, thank you very much for joining. And my team at PSX as always. Thank you. तो अगर कोई सवाल जवाब नहीं है, we can close. फहद अपना आप ईमेल एड्रेस या फेसबुक अकाउंट दे दें सबको, कोई सवाल रह गए हो तो आपके पास आओ। सर बस info@psx पे जो ईमेल आएंगी, विल लुक इनटू दैट। और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना वक्त निकाला
ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है कि शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन जो है ओवरसीज पाकिस्तानी किस तरह से उनके बारे में जाने, क्या ऑप्शन हैं, किस तरह इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और हमारे लिए ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, और हमारे पाकिस्तान का इकोनॉमी को बहुत अच्छा उससे एक सपोर्ट मिलती है। सो कोशिश यही रही कि हम ये सारे चीज़ें अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकें, सवालात के जवाब दे सकें। और दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह हम इस तरह के सेशंस और करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिर से आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। अल्तमश साहब, आपकी टीम ने काफ़ी इसके ऊपर हमारे साथ वर्किंग की और इसको प्रमोट करने में हमें हेल्प आउट किया। इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे आगे। एंड खलील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, इन सब चीज़ों को मुमकिन बनाया। जवाद साहब, फरहान साहब, फारूक साहब, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग एनीवन, नदीम नकवी साहब, अहमद अली साहब, उबैद भाई, वैद साहब, विद दिस। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। Thank you, Ji. Thank you very Thank you much very from much. the Thank you. Consulate thank you. General of Pakistan, Toronto. Thank you very much, everyone. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. Thank you so Alaikum much. assalam. Thank you so much. फहद, Thank you. सर, क्वेश्चंस देख लीजिएगा, जिसके भी हैं उनको प्लीज रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। वी हैव रिस्पोंडेड टू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर्बली, और हमने टाइप करके जवाब दे दिए, कुछ को इनबॉक्स में जवाब दे दिए हमने पर्सनली। फिर भी कुछ रह जाएगा, विल टेक केयर ऑफ दैट। हाँ, बिकॉज आई कैन स्टिल सी माय स्क्रीन मूविंग विद क्वेश्चंस। तो जैसे जैसे ठीक, क्लोजिंग की तरफ जाते जा रहे हैं, वो सवालात और आते जा रहे हैं, बट विल टेक केयर ऑफ बस दोस। आप बैठे रहें, एड्रेस करें, हम चले। और जी, ठीक है, बहुत thank शुक्रिया you आप लोगों everyone. का। ओके जी, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक Thank you, Ji. Hafiz. यू।